Hello. Hello. Good evening, everybody. Hi, hi. So if everyone can hear me, please type yes. Good evening. If you can hear me, please type yes. All right, super. All right, I think there will be a lot of people coming in. Hi, Anup. Hi, Adarsh. Hi, Keshav. Hi, Johnny. Super brilliant. All right, let's begin. Let's start our scanning today. So, of course, as all of you know, and I've been hearing this from everyone, कि यार markets कहाँ रुकेगा, कहाँ जाएगा, and all that. But क्यों रोकना है? चल रहा है, चलने दो. But it does seem like it is too much to take in. Of course, if you've gone through the stocks that we've discussed on YouTube, they have been doing brilliantly. For example, Oro Pharma, we took it at 500 odd levels, 485 levels. Now it is at 1000 plus. Then Birla Soft, oh my god, beautiful setup that we picked up. Today we had Infobeam Technologies or something. But anyway, we're going to discuss this while we scan it as well. I'm going to discuss some few more stocks which have not started yet and which has potential to do well as well. At least technical setups says so. तो हम आगे बढ़ते हैं. Let's start sharing my charts. All right. All right, guys. Please type yes अगर आपको चार्ट दिख रहा है तो. All right. Let's begin just a second. Okay. So we've got about, I think if I'm not wrong, let me just check it here. We've got about 17 stocks. Oops. We've got about 17 stocks that we're going to talk about. So first of all, we've got Aditya Birla Fashion. Now, interesting enough, I've got monthly chart on my left-hand side, जो छोटा सा है. Then I've got my weekly chart in the middle, and then I've got my daily chart on the right-hand side. We're going to discuss this because we're doing a end-of-week scan today. है ना? तो अभी आप देख सकते हो ये वीकली चार्ट पे आया है विद अ प्रोबेबल बेरिश डाइवर्जेंस. ओके, इट लुक्स लाइक अ करेक्टिव वेव. यू कैन सी दिस, राइट? It looks like a corrective wave. Now in the daily chart, you can see that well, there was a bearish diamond. There's a probable bearish diamond. I think ये
लास्ट में इट मस्ट हैव, ये टिक डाउन था, ये टिक अप हो गया है, बट एनीवे यू कैन सी दिस राइट, स्पेंड अनदर वीक हियर, मे बी एक टिक डाउन आएगा, देन वी कैन लुक फॉर री एंट्री अपॉर्चुनिटी। तो इसको एक बार हटा देते हैं। Then we've got Apollo Hospitals. Apollo Hospitals has a weekly bearish divergence. You can see this, and there's a downtick. And in the daily chart, you can see there was a bearish divergence here, and this could be the retest of that point of interest, which could also be, let us measure it, which is also 61.8% retracement. अब interestingly enough, this is the time when we can discuss this थोड़ा सा detail में. So this is my stock layout. So let me just draw a bigger picture first. So let's start from here and go till the wick finishes. Okay, so this is your like big term resistance with a bearish divergence in the weekly chart and daily chart a probable 012. अब इसको hourly chart में एक बार देखते हैं कि अगर ये 2 है, so क्या यहाँ पे और suggestions है. So there is a very mini, well, I won't call it a divergence, but you can see this, right? There's a weekly CPR here if it goes below this and all that, and there is a gap here as well. ठीक है, सो या तो ये गैप टेस्ट, गैप एग्जॉस्ट करके वापस गैप डाउन खुले तो आपको लगे कि हाँ नहीं चलो डाइवर्जेंस आ गए, बट दिस इज द सीन, like it just seems like by looking at this that this is a false breakout on the top, and if it breaks the low of today, then this might fall at least till here, which is the neckline of this head and shoulder, probable head and shoulder, and then maybe further down if everything falls into the right place. Now this was earlier जहाँ अपोलो हॉस्पिटल का ब्रेकआउट हुआ था, CIP went up, support went up. Now of course the setup's called, but otherwise अगर ये ऊपर खुलता है और इसके ऊपर चला जाता है, then there's nothing we can do. We just have to wait for Monday to finish and figure out. But weekly में there is a bearish divergence that basically suggests यही कि आज week का low अगर टूटेगा, then it might correct a little bit further. This is why this is in the list, right? फिर हम बात करते हैं एशियन पेंट्स का. एशियन पेंट्स monthly resistance, you can see this, weekly goes up from the bottom, and daily chart mein you can see there is a point of interest. That means there's a shoulder, head. Well, if I draw it like this, that's a shoulder, but I won't do that. I'll just draw a horizontal straight line, so that even if this is a resistance, you need a breakout. So either ek breakout hoga, so I'll draw let me draw a path for you. So either this breaks out, does a change in polarity and goes up, this is the path, or otherwise it can do a rejection. So Monday very important, कैसे होगा, pull back and then fall. दो पाथ का सिचुएशन हो बन सकता है, दोनों तभी आपको पता चलेगा जब मंडे आपको बताएगा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है कि रिजेक्शन हो रहा है. ठीक है, सो हम मंडे का वेट करेंगे. मंडे बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर वी नीड टू सी हाउ इट वर्क्स. फिर हमारे पास है एस्ट्रल. एस्ट्रल में भी आप वीकली में देखो, मैंने एक लाइन बना रखा है विच इज रेजिस्टेंस लाइन. यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस था, फेल, इट केम बैक, टेस्टेड द पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वहाँ टेस्ट पे यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस था डेली चार्ट में. दैट मीन्स दिस टेस्ट इज वैलिड, राइट. डेली में भी it seems like it's gonna correct, right? वीकली चार्ट देख के, अनलेस इट काइंड ऑफ ब्रेक्स आउट. तो नैरो वीकली CPR है, इसके नीचे का हम अलर्ट लगा सकते हैं. अगेन आई अंडरस्टैंड कि इतने बुलिश मार्केट में शॉर्ट सेल के पोजीशंस कैसे लें, आपको डर लगेगा, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन वो तभी लीजिएगा जब आपको कंफर्मेशन आएगा, इस इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन विच इज ब्रेकिंग टुडेज लो, गोइंग बिलो द CPR एंड ऑल ऑफ दैट. क्योंकि अगर ये बेरिश डाइवर्जेंस बना है डेली चार्ट में भी, इफ आई कैन मेजर इट अगेन, आप देखो ये 61.8% का पुल बैक आ चुका है. और यहाँ पे आरडी चार्ट में let's see quickly. Well, I don't have a divergence, but if it goes, pulls back and then falls, then also it's okay. But otherwise, yes, setup वही है कि weekly resistance पे there's a bullish bearish divergence in the daily chart also, so which suggests weakness. However, आप देख सकते हैं कि it's बहुत ही shady price है अभी, because it's in a range as well. Just this second. All right, then you have AU Financial Bank, AU Small Financial Bank.
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट there was a bearish divergence, it's just pulling back, it looks all right. यहाँ पे actually interesting है ये gap. So weekly gap down, tested, fall, goes up, again there's a test. यहाँ test पे there was a bearish divergence. अभी ये अगर मंडे को ये दो चीज हो सकता है, या तो ये रिजेक्ट करेगा और एक टिक डाउन होगा, तो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपको ट्रेड मिलेगा ऑन द डाउन साइड, या मंडे इसको एग्जॉस्ट करेगा। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन है इसके ऊपर बंद होगा और ट्यूसडे ऊपर फॉलो थ्रू देगा, then you are going to buy. So you have to wait for Monday to do something so that Tuesday onwards you get a trade. We discussed this last week also कि कभी कभी ऐसा होता है कि मंडे के ओपनिंग या मंडे की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है पूरा हफ्ता कैसा ट्रेड मिलेगा. So that is the case here as well for now. फिर हमारे पास है बायोकॉन. मंथली चार्ट में आप देख सकते हो ये सपोर्ट पे है, गैप पे है. अगेन ये इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट लेवल. ये गैप पे है, वीकली चार्ट देखो, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर ये गैप पे आया, exhausted, hardly any follow through, benefit of doubt, goes back up, bearish divergence, comes back and goes to weekly EMA. Now for me to buy this, I think monthly chart फिर भी ठीक लग रहा है. weekly chart में अगर मंडे टिक डाउन होगा, अगेन सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट, मंडे विल कंफर्म हाउ द वीक गोज. सो अगर मंडे ये नीचे गिरता है, देन देयर इज अ टिक डाउन, then at EMA there will be a tick down and etc, and then you will expect prices to fall further. Now however it is totally dependent on Monday. Monday बहुत जरूरी है. अगर गैप डाउन खुलता है then वीकली वीकनेस भी समझ आएगा, तो गैप डाउन खुलेगा तो और बेटर रहेगा हमारे लिए. फिर हम आते हैं डाबर पे. डाबर में क्या है, ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, वीकली ईएमए पे है. सो यहाँ से देखते हैं, ऊपर जाता है बेरिश डाइवर्जेंस, नीचे आता है बुलिश, वेल नॉट बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है, ऊपर जाता है, अगेन नीचे आता है, नो बुलिश डाइवर्जेंस, ऊपर जाता है. एट ईएमए यू हैव अ बेरिश डाइवर्जेंस हियर इन द डेली चार्ट. ये बेरिश डाइवर्जेंस है. लेट्स कैलकुलेट. ये टिक डाउन हुआ, लो नहीं टूटा, एक टिक डाउन हुआ, नेक्स्ट डे स्लाइट लो, टिक डाउन, लो. मतलब दिस इज वेडनेसडे which trade actually made sense, and this is absolutely fine as well. Looks like a corrective move here as well. देखो 0 1 2 3 3 पे divergence and fall. Well, if it does fall, but weekly chart poor है, daily chart में divergence है, so this setup also makes sense. Once again, Monday how it opens plays a very important role, so you can kind of wait for that. Let me just fix this properly, है ना. सो डाबर का ये सीन है. देन वी कम टू दीपक नाइट्रेट. नाउ दीपक नाइट्रेट एक रेजिस्टेंस पे है यहाँ पे. सो ऐसे कुछ स्टॉक्स हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे और हमने बात किए थे कि अगर ये ब्रेकआउट होगा देन वी कैन बाय, एंड few of them did break out, and we'll talk about this in the second half of this session, right? But you can see here beautiful resistance, low, higher low, higher low, higher low, and then this seems like maybe pullback and breakout or a breakout. So दीपक नाइट्रेट का आपको वेट करना होगा, बिकॉज आज के दिन ये ऊपर ब्रेकआउट का ट्राई किया था लेकिन बहुत बड़ा रिजेक्शन है. सो दो चीज हो सकता है. वंस अगेन, मंडे अगर ये नीचे जाता है और ये रेड टिक होता है, अगर मंडे खराब दिन हुआ तो जितने हमने स्टॉक्स की बातें की ना, और रेड टिक होता है, एमएसीडी में बेरिश डाइवर्जेंस बनता है, दैट मीन्स रिजेक्शन है एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ ट्रेड ऑन ट्यूसडे. और अगर, क्योंकि बाकियों में भी वीकली में प्रोबेबल बेरिश डाइवर्जेंसेस बने हुए हैं, सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैसे मंडे का दिन कैसा जाएगा हमारे इन स्टॉक्स के लिए. So again, as I said, at resistance, unless it breaks out, I can't do really anything. You have to wait for a tick down and then a follow through and then a trading opportunity hopefully. ठीक है. फिर हम आते हैं डीवीज लैब्स पे. डीवीज लैब्स में आप देख सकते हो मेरा अलर्ट लगा हुआ है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन अभी something has changed. So resistance, breakout, support, 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 breakout, CIP, resistance, fall, resistance, resistance, fall, and now at a resistance level, and it has come to daily EMA. previous month अच्छा था, engulfing bull and follow through भी हुआ, तो इससे भी हमें ट्रेड करना है. आप देखो मेरा अलर्ट यहाँ पे है इसके ऊपर. सो मेरा ये मानना है कि ये वीकली EMA पे टेस्ट हुआ है, ऊपर गया वीकली EMA टेस्ट, एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो हायर. सिमिलरली डेली ईएमए पे आया हुआ है, एंड देन 1 आवर को टेस्ट करते हैं. 1 आवर में देयर वाज अ बुलिश डाइवर्जेंस. नाउ इफ आई पुट आई think my pivots are loading. Yeah, so narrow CPR next week,
if it gives you a follow through on the upside, I think it's a decent place to be in on the upside, because daily EMA pay, there are decent candles that suggest that these are rejection levels, support levels, and the prices might go higher. So आप इसको भी as a buying opportunity, if it gives you, again, if it's all if, I can probably drag my alert here कि अगर आपको यहाँ तक का भी pullback मिल जाए तो why not. All right, so that's DV's labs for you. Let's go further. फिर हमारे पास है ICICI Lombard. इसमें बुलिश डाइवर्जेंस है, गोज अप, ईएमए गोज अप, लुक्स ऑल राइट. ये इसलिए लिस्ट में क्योंकि यहाँ पे वीकली में बेरिश डाइवर्जेंस है. अब वीकली में बेरिश डाइवर्जेंस होता है तो क्या होता है, दो चीज होती है, या तो ये करेक्ट होगा, इसका मतलब इसका लो टूटेगा एंड दिस विल करेक्ट फर्दर टिल द मूविंग एवरेज इज नॉट मच, आई थिंक टिल 11 EM, ये जो ब्लू लाइन है 11 EMA वहां तक आ सकता है. अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लगाते हैं तो बेस्ट पॉसिबल वे है ट्रेड करने का, इसको यहाँ पे आप अपना एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ. ठीक है, डेली में भी बेरिश डाइवर्जेंस से गया है, अगर ये पुल बैक है और नीचे आना है, सो दिस इज योर प्राइमरी टारगेट, एंड इफ दिस ब्रेक्स ऑफ कोर्स यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू फॉल फर्दर, बट however this is a nice breakout. I have my doubts that this will kind of break the support line, बट इसमें सेटअप बनेगा. कब बनेगा, अगेन मंडे का क्लोजिंग बहुत मैटर करेगा, बिकॉज अगर मंडे इसका लो टूटता है या ये लाइन के नीचे जाता है, देन दैट इज व्हेन यू कैन प्लान योर एंट्रीज. I think you can wait for next week or next Monday to probably give you some opportunities here. Okay, then we come to Jubilant Foodworks. Ab Jubilant Foodworks mein you can see there's a bullish divergence here, it goes higher. यहाँ पे भी this goes higher, but there is a probable bearish divergence in the weekly chart. ये सिर्फ probable है. Daily में there is a confirmed bearish divergence with a very weak dark cloud cover. तो इसका नीचे ब्रेकआउट होना जरूरी है. अब इसको आर्ली चार्ट में एक बार खोलते हैं और डिटेल में बात करते हैं. वेरी नैरो CPR, सो अगर ये गैप डाउन खुलता है देन स्टिल आई एम एटलीस्ट होपफुल कि हाँ ठीक है चलो कुछ हो सकता है. सो लेट्स ड्रॉ दिस फर्स्ट. ठीक है, लेट्स गो बैक टू द डेली चार्ट. ठीक है, सो इफ दिस इज अ डबल टॉप, दिस इज योर नेक लाइन यहाँ पे, एंड इफ इट गोज बिलो दिस आई थिंक इट कैन कम टिल द वीकली EMA जैसे आ रहा है. सो यहाँ तक आ सकता है, पुल बैक हो सकता है, नॉट अ बिग डील आई फील. बट अगेन कंफर्मेशन जरूरत है, मतलब मंडे का कैंडल एक और खराब होना चाहिए या गैप डाउन खुलना चाहिए समवेयर हियर एंड स्टार्ट्स फॉलिंग एंड ब्रेक्स दीज लोज, देन मे बी दैट मेक्स सेंस. वीकली लोज टूटने पे भी आई थिंक देयर विल बी अ बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्मेशन, बट अगेन थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा बिफोर क्लोजिंग ऑफ द वीक विच इज फ्राइडे अगेन. बट ये कुछ ही स्टॉक्स है जिनमें कुछ सेटअप बनने की संभावना है, बाकी सब उड़ चुके हैं या कहीं जा चुके हैं, है ना. फिर हम आते हैं मैरिको पे. मैरिको एक्चुअली हैज अ प्रीटी डिसेंट सेटअप. मंथली में बेरिश डाइवर्जेंस है, चल ही रहा है. वीकली में बेरिश डाइवर्जेंस है, ट्रिपल बेरिश डाइवर्जेंस, यहाँ से यहाँ इनफैक्ट, एंड देन इट फेल, यहाँ गिरा, फिर ऊपर आया, वीकली EMA तक रिट्रेस्ड, वहां पे जाके यू हैव अ bearish divergence on daily chart. I think this is actually a pretty decent setup for a short sell, but again it all depends market कैसा है and all that. Just let's check the hourly chart. एक बार hourly chart देखते हैं ताकि हम एक, if you can get a trend line or something out of this, why not. Cancel. ठीक है, and you do have a narrow CPR, so you can use the CPR as well. I don't know how respectful is it of the CPR. डेली चार्ट में फिर चलते हैं एक बार वापस, एंड लेट्स चेक द मंथली CPR. आई थिंक दिस इज इट, यस. सो जस्ट अबव द मंथली CPR, बट या आई थिंक if we forget the CPR also, there is a bearish divergence at weekly EMA. weekly has a dark cloud cover last week, this week shooting star. तो अगर वीकली लो भी टूटता है देन ऑल्सो दिस इज गुड, एंड अगर ये लोज भी टूटते हैं विच इज बेसिकली आज का ट्रेड था, अगर आप सोचोगे कि फ्राइडे ट्रेड नहीं करना है यार कल, वो भी ठीक है, तो कल भी अगर इसका लो टूटता है देन आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेस टू बी इन. अगेन गैप डाउन खुलता है तो व्हाई नॉट, यू कैन ऑलवेज यूज द गैप टू एंटर. सो इसका ये सीन है एंड इट लुक्स लाइक अ डिसेंट सेटअप एज वेल. ठीक है, मैरिको. फिर हम जाते हैं मारुति सुजुकी पे. मारुति सुजुकी भी मंथली अभी ठीक है, 2 हफ्ते बचे हैं मंथ फिनिश में, तो नथिंग टू डू हियर. बट वीकली चार्ट में सो ब्रेकआउट CIP गोज अप, बेरिश डाइवर्जेंस है RSI में भी एंड MACD में भी. इट फेल, of course, excuse me, the trade was here itself like few days ago, but that is, look at that trend line right in the daily chart.
एंड यहाँ पे एक स्पाइक मार के इट वेंट बैक इन. नाउ इसका बेस्ट केस, इसका बेस्ट way to trade this would be if I go to the hourly chart. Let's check it out. इसको देखते हैं अच्छे से. हाँ, यहाँ पे एक फॉल्स है ना, तो हम इसको, yes, I think we can probably draw something here like this, maybe here also, but I think we'd like to make it as safe as possible. So narrow CPR है, आपको दिख रहा है next weekly CPR narrow है. So hopefully अगर ये CPR के नीचे गैप डाउन खुल जाए या इस लाइन के नीचे चला जाए, फिर भी टारगेट्स बहुत ह्यूज हैं. सेंसर डाइवर्जेंस है आर्ली चार्ट में, सो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. हाउएवर yes, there is a false breakout, मतलब ये false ही है to be honest, but a gap down would probably suggest कि ये weekly divergence है, daily में भी divergence है. This all might work and correct a little bit. ठीक है, so that is Maruti for you. But of course Monday plays a very important role. खुलेगा कैसे? फिर हमारे पास आता है इन्फो एज. इन्फो एज यहाँ बुलिश डाइवर्जेंस से मंथली में शुरू हुआ ऊपर at monthly EMA, then of course prices went higher. यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था रेजिस्टेंस, जो कि इस वीक ब्रेकआउट हो चुका है. यू सी हाउ ब्यूटीफुल दैट इज. डेली चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे. ठीक है, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट. अभी दो अपॉर्चुनिटी है, ऑफ कोर्स इसका फॉलो थ्रू होगा तो यू कैन गेट इन, बट योर रिस्क इज ऑलवेज बिलो टुडे दिस वीक्स लो. ऑलराइट, दिस वीक्स लो थोड़ा सा बफर ऐड करो. या डेली चार्ट में अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ तक टेस्ट कर दे एंड देन gives you an opportunity, that is also possible. That is the best opportunity. CIP setup. Of course there is shoulder head shoulder and the target 3613 से लेके 4813 ले लो अगर एक बार के लिए, तो 1200 पॉइंट तो है ही एटलीस्ट. So even if I draw like this here, so this, sorry it's a little टेढ़ा, but yeah, I mean this should be your target if this is a valid breakout and not a false breakout. Okay, so ये again so info edge is something that you should keep in your list as well. Again, IT companies for the past couple of days has done fantastically well and broken out some really good levels. Then we come to Naveen Fluorine. Naveen Fluorine bearish divergence मंथली चार्ट में 012 नीचे गिरा, ये टेस्ट हुआ है EMA पे. वीकली चार्ट में भी टेस्ट हुआ है एंड डेली चार्ट में भी टेस्ट हुआ है. अगेन दिस यू हैव टू वेट फॉर, ये एक सपोर्ट लेवल से जंप किया था EMA पे. CIP है इन द वीकली चार्ट, यू कैन सी दिस एज वेल. डेली चार्ट डोजी वियर्ड कैंडल्स, हमने पहले भी एंट्री की कोशिश की लेकिन मिला नहीं, बट दिस टाइम यू नीड अ डाउन टिक. सो मंडे नहीं हो सकता है, मे बी ऑन अ ट्यूजडे if it gives you a bad candle on Monday. Now here in the hourly chart there is a narrow CPR, and if there is a gap down, then this level again becomes like a, you see this level here again becomes like a false kind of a breakout and then a resistance here. So मेरा कहने का मतलब है अगर ये gap down खुलता है और नीचे जाता है, it can test this level and then go down further. But again Monday कुछ होना पड़ेगा. Monday को ये MACD का डाउन टिक होना पड़ेगा. ऑलराइट, ये एक डाउन टिक, पहले एक खराब कैंडल बनेगा. ट्यूसडे ऑनवर्ड्स वी विल टेक दिस ट्रेड, दैट इज फिक्स्ड. ओके, डोंट गेट इनटू एनी बायसनेस. जस्ट बिकॉज हमने यहाँ डिस्कस किया है डजंट मीन वो होगा. इसकी प्रोबेबिलिटी है. इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है बिफोर वी जंप इनटू एनी ट्रेड. फिर हम आते हैं PEL पे. आई थिंक यस, सो ब्यूटीफुल सेटअप. ऊपर जाता है मंथली बुलिश डाइवर्जेंस के कारण, EMA पे आ रहा है. EMA पे दिख रहा है अगर ये बाकी 2 हफ्ते भी ऐसे ही रहा या बुलिश गया, देन इट्स अ वेरी गुड सेटअप. वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हो यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर गया, EMA पे आया. EMA पे आके यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम बुलिश डाइवर्जेंस बनाया RSI में भी, विच सजेस्ट्स डिसेंट मूव ऑन द अपसाइड. यहाँ पे अगर दिस इज माय नेकलाइन ऑफ दैट डबल बॉटम, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस. So this kind of becomes your support level now. So this plus buffer I think becomes your support level. Let's just check out monthly CPR का पहली बार क्लोज हुआ है तो इसका follow through might give you a good trade here as well. So इसको एक बार हटाते हैं and hourly chart पे जाते हैं. Hourly chart पे you can see that's your resistance. There is a big gap here, falling gap. यहाँ पे एक अच्छा खासा falling gap है. Basically that suggests that अगर ये यहाँ पे आप CIP का खेल खेल सकते हैं कि अगर ये नीचे आया and then ऊपर गया, then also you can get good trade in. Wide CPR लेकिन weekly का, which not that great. Excuse me.
All right, so let's go back to the daily chart. So this is your neckline. That is not. This is your neckline, and yeah, hopefully this is the one on the upside. So it looks good. Then you have Vedanta again. Monthly EMA, weekly में bullish divergence went up, head and shoulder, shoulder, head, shoulder, and breakout. Now this seems like a breakout, a false breakout होने का बहुत कम chance है. So you're looking for buying opportunities, and I mean technically मैं थोड़ा सा अपने आप को disadvantage देता हूँ. Technically this should be your reward as well, plus a little. So that's your gap as well यहाँ पे. So that should be your reward here, है ना? So Vedanta looks all right as well. Head and shoulder breakout हो रखा है यहाँ पे. Okay, now before we take stocks and I would like to discuss Nifty Bank Nifty quickly. So let's यहीं पे शुरू करते हैं, इसी में यूज कर लेते हैं. So Nifty cash में ही डिस्कस करते हैं. So monthly, look at that, fantastic. Up, I think unless this gap is exhausted, which is a weekly gap in Nifty, अगर ये gap जब तक exhaust नहीं होगा तब तक ये ऊपर जाएगा. Maybe ये test करने अगर आ गया, which is still 1000 points from here, if that happens, then that is a golden opportunity to enter once again. But I mean till then you're just looking for buying opportunity. अब वो opportunity कैसे आएगा, क्योंकि daily EMA से बहुत दूर है और एक gap यहाँ पे है, एक ये रहा और ये भी रहा और ये थर्ड गैप, 3 बड़े बड़े गैप्स आ गए. तो मुझे लगता है एक छोटा सा करेक्शन या साइडवे मूवमेंट में भी नेक्स्ट वीक, ताकि ये ईएमए यहाँ तक आ सके और ईएमए के पास हमें एंट्री ऊपर की ओर मिल सके. एक तो ये है. दूसरा, अगर मैं आवर्ली चार्ट खोलता हूँ, इसमें देखते हैं कि अगर हमें वाइड वीकली सीपीआर है तो अगेन यहाँ तक थोड़ा सा भी नीचे पुल बैक हो और आपको सीपीआर के आसपास मिल जाए तो भी आप ले सकते हो. बट टू बी ऑनेस्ट, to enter this at this point of time, I would need a dip till the gap, any gap. So अगर ये gap अब latest gap हो गया तो यहाँ तक आ जाए, and maybe then this would give me an opportunity here as well on the upside. But आना जरूरी है. अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं. Same thing, look at that monthly chart. Now the only thing is your monthly RSI is still not confident enough. 60 के ऊपर नहीं जा रहा है, which is strange. हमारे पास वीकली में गैप है, एज आई सेड, कि अगर ये टेस्ट होता है, यहाँ तक टेस्ट डाउटफुल, बट अगर होता है देन दैट इज योर अपॉर्चुनिटी वेदर यू वांट टू टेक दैट और नॉट. डेली चार्ट में भी एक बड़ा गैप, 2 यहाँ पे एंड थर्ड, ये 3 बड़े बड़े गैप्स हो चुके हैं. तो मुझे लगता है कि एक टेस्ट हो जाए तो बेटर रहेगा. टेस्ट कहाँ से सोचते हैं हम, ये भी लाइन बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. दिस इज योर रिसेंट हाई ब्रेकआउट. तो अगर ये यहाँ तक आ जाए, विच इज अगेन about 2000 points roughly, अगर ये टेस्ट करने यहाँ तक आ जाए, then that will be a brilliant opportunity to again think about entering and all that. But ये आएगा कैसे या नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता. आई थिंक गैप टेस्ट भी, अगर लेटेस्ट गैप टेस्ट तक भी आ जाए और ईएमएस ऊपर तक आ जाए, तभी भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. आई थिंक आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड, मैं खाली सोच रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि बट दैट्स द प्लान. आई थिंक आई एम गोइंग टू look into buying bank nifty for now, unless something changes, unless this level is breached once again. Unless this level is breached, I'm happy to going long whenever I get an opportunity. ठीक है. इसको भी आवली चार्ट में एक बार देख लेते हैं. आवली चार्ट में एज आई सेड, यहाँ पे हमने एक चेंज इन पोलैरिटी का ट्रेड लिया था, डिडंट होल्ड मच, बट यस, ये एक अपॉर्चुनिटी था. अभी हमारे पास जहाँ भी है वाइट सीपीआर है, वेल नैरो सीपीआर है इनफैक्ट बैंक निफ्टी में, विच इज नॉट बैड. तो मे बी it dips to the CPI and goes back up again, and वहाँ पे आप कुछ करने का सोच लो. But we have to wait for a dip to enter this. Otherwise, stock specific, I believe. ठीक है. This is it. Now let me discuss few other stocks that is very very important. All right. So I'm just gonna get into the monthly chart a little bit. So ऊपर से खोलते अतुल मंथली बुलिश डाइवर्जेंस अभी कंफर्मेशन हुआ है, एंड दिस लुक्स लाइक अ प्रीटी डिसेंट रन ऑन द अपसाइड. ठीक है, हो सकता है, एकदम हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम. डेली में ऑफ कोर्स ईएमए तक आएगा, ऊपर जाएगा, ये सब एक बेसिक पैटर्न होता है एक स्टॉक का. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट सीम्स लाइक अ फैंटास्टिक स्टॉक टू बी इन. देन वी हैव IEX. हम ये पहले से ही बात करें, ये ऐसा सेटअप बना रखा है ना एक्चुअली, which looks pretty decent. Like there's a bullish time in the monthly chart, and
It seems like it's going to go up. In fact, if I switch on a quarterly chart, you see this quarter, month khatam hoga, quarter khatam hoga. It looks like a nice candle here as well. Now the only challenge here is this level here, ये वाले level है ना, ये एक लेवल एक चैलेंज है, बट मुझे लगता है कि अभी मंथ में 2 हफ्ता पड़ा है. आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट इफ इट ब्रेक्स आउट, अगर ये टूट जाता है तो सीलिंग आप देखो पूरा खाली पड़ा है, पूरा ऊपर खाली पड़ा है, एंड दिस माइट गिव अ लॉट ऑफ गुड रिटर्न्स आल्सो. ठीक है. सो ऑफ कोर्स डेली में आप देख सकते हो नीचे आ रहे, मे बी एट ईएमए यहाँ आके फिर ऊपर शुरू हो जाएगा. तो आप अगर डिप ले भी रहे तो ऐसे कोई खास बात नहीं है. ठीक है. तो अतुल, आईएक्स, टू स्टॉक्स अभी भी शुरू ही हुआ है. Alkyl amines, another stock, double bottom bullish, in fact bullish divergence pick up last month था, इस बार हाई टूट गया बहुत अच्छे से, and looks like a decent setup. Again goes up at EMA and today it shot up as well. So another stock that looks like a good setup according to our system. So again मैं पहले भी बोलता हूँ और बार बार रिपीट करता हूँ कि हम ये जो डिस्कस करें, this is according to our technical setup that we follow, which works pretty well for us. अगर इसको किसी भी तरीके का टिप मत समझिएगा, आप प्लीज किसी से समझ के, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके या अपने सेटअप पे अप्लाई करके इन स्टॉक्स को, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप इस पे एंटर कीजिएगा. दिस सेशन इज ओनली टू शो यू कि हम कैसे स्कैनिंग करते. फिर हम आते हैं इन्फो बीम टेक्नोलॉजी. दिस वाज ब्रिलियंट टुडे, 50% अबव ओपनिंग इन द मंथ. फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट मंथ टेकअप हो गया था, एंड आज इसका हाई टूटा. आज इसका अलर्ट बजा, हमने टेलीग्राम में इसका मैसेज भी भेजा कि भाई अलर्ट बज चुका है, और आज के आज ही आई थिंक दिस वाज व्हाट लाइक 17% up or something, right? And that is fantastic, absolutely fantastic. This is how it works. Like करते ही कंफर्मेशन ठाक करके बढ़ गया. सो इन्फोबीम अगेन समथिंग दैट हैज जस्ट स्टार्टेड. मैं उन स्टॉक्स को आपको दिखा रहा हूँ जो अभी स्टार्ट ही हो रहा है. जो ऑलरेडी हो चुका, जो बढ़ चुके, उसका हम अभी क्या कर सकते हैं. देन यू हैव थायरोकेयर, अगेन बुलिश डाइवर्जेंस हियर, गोस टू ईएमए, टेक्स अ बेंड एंड ब्रेक्स आउट. वीकली चार्ट में आप देखो, दैट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, रेजिस्टेंस शोल्डर बना के, एंड देन इट हैज ब्रोकन आउट. एक हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पे था, उसका भी ब्रेकआउट हो गया. सो दिस सीम्स लाइक अ डिसेंट सेटअप एज वेल. डेली चार्ट में आप देखोगे ये लेवल जो मैं ब्रेकआउट बोल रहा हूँ वो एक गैप से ब्रेकआउट हुआ है. सो दिस गैप बिकम्स लाइक योर बेस. ठीक है. इसके नीचे का आपको रिस्क रहता है, स्टॉप लॉस रहता है, या जो भी आप बोल लो. ठीक है. सो थायरोकेयर, अनदर स्टॉक व्हिच हैज जस्ट स्टार्टेड आई बिलीव. देन यू हैव एप्टेक लिमिटेड एट मंथली ईएमए, वीकली बुलिश डाइवर्जेंस, गोइंग हायर, नो प्रॉब्लम. ऊपर जाएगा, ईएमए तक आएगा, फिर ऊपर जाएगा. दिस इज हाउ इट शुड बी. ऑफ कोर्स दिस इज हाउ इट शुड बी. फिर भी हम देखेंगे. सो दिस कुड बी लाइक शोल्डर बना के देन ब्रेक्स आउट, either way. So Aptech is another stock that might just start doing what it's supposed to do. फिर हमारे पास आता है मदर्स एंड सुमी at EMA start हो गया. there's no bullish divergence here, but you can see doji बना के goes up, doji then goes up, and you expect the prices to go higher. Another stock which had moved earlier because of the bullish divergence, but this is the first retest of the moving average, which pretty good. फिर आता है गुजरात गैस. डेली बुलिश डाइवर्जेंस है, अभी ऊपर ईएमए के पास आई रहे, कंफर्मेशन इसी महीने हुआ है. दिस इज द रेंज. इफ इट ब्रेक्स आउट ऑफ इट, देन अगेन फैंटास्टिक. अगेन वन ऑफ दोस स्टॉक्स व्हिच जस्ट स्टार्टेड मूविंग. देन वी हैव आरबीएल बैंक. हमने यहाँ पे पकड़ा था जब यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस था. इट स्लोली स्टेडीली इट हैज कम हियर in a year's time almost, and now it seems like it has broken out of this resistance. So RBL Bank now इस लाइन के नीचे थोड़ा बफर देके आप उसको बेस बना सकते हैं. Now the only thing here is मैं कैसे इसको ट्रीट करूं, because I would like to wait for the month to close. ये महीना अगर ये पूरा वापस अंदर चला गया, that means it becomes a wick rejection. तो मुझे वो नहीं चाहिए. तो हो सकता है मैं 2 हफ्ता बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि भाई टेस्ट कर लो, 2 हफ्ते ऐसे ही निकाल दो, ताकि मुझे अगले महीने से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस पे मिल सके. सो आरबीएल बैंक अगेन समथिंग व्हिच हैज जस्ट ब्रोकन आउट. देन यू हैव टैनला once again it was in the list earlier also. from here bullish divergence से शुरू हुआ था ये, फिर ईएमए पे आया. पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट पे आई डोंट हैव अ बुलिश डाइवर्जेंस, बट इट इज फैंटास्टिक. मतलब बहुत ही सुंदर कैंडल इसने बनाया है इस बार.
and you can see the daily chart also gone up. This is your first point of interest जहाँ से पहले गिरा था. So या तो ये एकदम जोरों से तोड़ देगा या यहाँ पे धीरे धीरे करके फिर तोड़ेगा. तो क्योंकि अब आप 1100 पे ऑलमोस्ट हो, तो आप 200 पॉइंट वेट करके भी एंटर कर सकते हो, बिकॉज सीलिंग इज अगेन फार अवे, या आप एंटर करके यहाँ पे केयरफुल रह सकते हो. आइदर वे यू नो टेक अ कॉल. बट ये कुछ चीजें जो अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, इफ यू नॉट एंटर्ड येट, देर आर थिंग्स दैट यू कैन स्टिल कैच अप टू. सो ये वो स्टॉक्स हैं, ये वो स्टॉक्स नहीं है जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं ऑरो फार्मा की तरह, या ये वो स्टॉक्स नहीं है जो अब ट्रेड करने में जिनमें डर लगेगा. आई थिंक again, this is according to our analysis, what we do as per our system. All right, ठीक है. तो guys, time has come. Let's discuss some of the stocks that you want me to talk about. And before that, I can also speak about gold. By the way, gold, fantastic. Yesterday, what we are waiting is, you can see here, right? There's a shoulder head. 2 hours में एक shoulder बनेगा अगर, और shoulder बन के टूटेगा. That is what we are hoping for if gold has to go up, right? इसका एक बार वीकली चार्ट खोल लेते हैं. ऑफ कोर्स टुडे द एंटायर about 4 hours is still due, so yeah, we still have to wait to see what's gonna happen, है ना. तो गोल्ड का ये प्लान रहेगा हमारे पास. Then if I come to silver, I think silver has fallen as well today a wee bit, है ना. So you can see there's a wide monthly CPR which is going to change after 2 weeks, but there was a bullish divergence here in the gold में भी, लेकिन unfortunately वो 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट ये 4000 पॉइंट ऊपर था. So impossible to buy. So wait till it comes to daily EMA, maybe either, and then create something and gives you an opportunity. So आज hopefully कुछ नहीं हो तो हम Monday next week ले सकते हैं. Crude is something that is pretty interesting, because crude में there is a bullish divergence in daily chart. Weekly seems like a decent candle. You can see this, right? So if I can just that, yeah, so you can see support पे weekly में doji बन रहा है. So if the high breaks, that's a good place to be, right? और आपको 2 hour चार्ट में, छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट में आप देख सकते हो ये शोल्डर बन रहा है एक, and if this breaks on the upside, then we are in. Now hopefully it doesn't do that today, and hopefully it does it like on Monday, so that we can actually make some money out of it and get in as well. Monthly S1 के ऊपर जाके S1 से support ले रहा है, which is, these are good signs, to be honest. If I plot, let's plot, I've got crude oil opened here, है ना. So यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप लाइन जो मैंने 2 आवर में बना रखा था, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने बना रखा है. So अगर इसके ऊपर जाता है, then crude oil could give you really good opportunities on the upside. ठीक है. So crude oil, again we are hoping that weekly CPR अभी खत्म हो जाएगा, next weekly CPR खुलेगा, then इसके ऊपर जाएगा, then we got a good resistance breakout. All right, then we get to कॉपर डेली में बेरिश डाइवर्जेंस की तरह लग रहा है, बट अगेन ये पहला कैंडल है. अगर मंडे बेरिश होगा तो वो सेकंड टिक डाउन होगा, एंड देन ऑल दैट विल हैपन. सो अभी कुछ नहीं है. आई थिंक इट्स सेफ टू से विल स्टे अवे फ्रॉम दिस राइट नाउ. एंड देन वी हैव नेचुरल गैस इज एट सेंसर डाइवर्जेंस. तो ईएमए तक आएगा. ईएमए पे आके अगर 2 आवर्स में बेरिश डाइवर्जेंस बनाता है, देन वी आर रेडी टू सेल दिस अगेन, राइट. हमने नेचुरल गैस का पहले भी बात किया हुआ है मंथली चार्ट को दिखाकर, कि जब ये मंथली ईएमए पे आया था, वी वुड लाइक टू सेल. उस समय यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस था वीकली चार्ट में, यू सी दिस, and we would like to sell, and that is what happened. It's broken the channel. Now the only thing is that if it comes back up here to test the EMA in the weekly chart, that would be a good place to sell again. Or if it comes to the daily EMAs here somewhere, that will be a good place to sell again. But we need a bearish divergence or some sort of thing in the 2 hour chart also. All right, so I think that's about it from my side, from my end. This is all the analysis that I did for you. Now, if you want me to look at any particular stock, I'm happy to do that. Otherwise, I think we can call it a day as well.
All right, so somebody's come with Birla Soft. So let's go back here. Birla Soft is making new highs. I've actually spoken to some people here who are, good investors, and they're doing an SIP in Birla Soft. So basically, there's a big. I remember getting in at around 300 levels, and I got out at 550 or something, like some quantity, and I'm still holding few. But what a stock, man! I mean, beautiful move on the upside. I think as I said, I know people who are doing like SIP in Birla Soft, so God knows. So abhi kuch nahi hai, abhi everything is good. There's no bearish sign at all. So for me, if you want to buy or trade Birla Soft, जब भी EMA पे आएगा, जैसे यहाँ पे just use CPR if you know the system, or the divergence in the hourly chart to enter on the upside, yeah. Unless something changes, of course, the next week, but looks all right. फिर आपके पास है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस. Sorry, India Bulls Housing Finance. Yeah, it looks all right as well. You can see I've got drawn like kind of a range here, which kind of needs a breakout. अब इस बार हुआ है, लेकिन as I said, Monday becomes very important कि ये false है कि नहीं. RSI ऊपर है, so it doesn't look like false होगा. Monthly chart very interestingly यहाँ पे bullish divergence था. If this is a test, then it started going up. So EMA तक आया, फिर it's going up. So India Bulls Housing also, unless something changes, this looks okay. This looks all right as something that I'd be interested in for a longer term, है ना. लेकिन क्योंकि ये इतना गिर चुका है एकदम बॉटम पे, so इसका सीलिंग भी उतना ही खुला हुआ है. But once again, unless check it with fundamentals also. Just because it is right at the bottom, check it with fundamentals कि भाई कुछ ठीक हुए हैं तब तो टेक्निकली तो ठीक है, कुछ और ठीक हुआ है तब अच्छा रहेगा इसके अंदर. Then you have Vakranji. I think it's right at the bottom, right? But there's no divert in the monthly chart. So it could be a dead pigeon bounce. मतलब, you know what a dead pigeon bounce is? So basically, if you throw एक मरा हुआ भी pigeon ऊपर छत से, तो ये कहा जाता है कि वो आप अगर बहुत ऊपर से एक मरा हुआ pigeon भी फेंकोगे तो थोड़ा सा एक bounce आएगा. So this could be a dead pigeon bounce, but because I'm just saying this, हो सकता है कुछ और हो, अच्छा हो, but I'm just saying this because और कोई bullish setup है नहीं इसमें. So I don't know anything else about this. So there's no other bullish setup apart from what I've just said. कि ये जो छोटा bounce आ रहा है, maybe it's just a temporary bounce. So unless, in fact, let me tell you this. This is almost like a rectangle, okay? So let me draw this. So if you're really interested in this, excuse me, if this level breaks, that is when you can probably think about long term. But otherwise, maybe agar so 0 1 0 1 2 3, अगर ये maybe यहाँ तक भी आ जाए, then it's probably good enough. But क्या वो आएगा मुझे नहीं पता, या मुझे लगता नहीं है, because वैसा सेटअप नहीं है यहाँ पे अभी तक. ठीक है, Voltas. Excuse me. Yeah, Voltas as well. Like so it's gone till EMA. EMA पे ये मेरे छोटे छोटे डेली ट्रेंड लाइंस है. बुलिश डाइवर्जेंस था यहाँ पे शायद एक 012, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस, करेक्ट, एंड देन इट्स गोइंग अप. ठीक है, एट EMA यू आर लुकिंग टू री एंटर. आई थिंक यहाँ पे किसी ने एंट्री किया भी होगा. अर्ली डाइवर्जेंस है कि नहीं देख लेते हैं. नो अर्ली डाइवर्जेंस, बट यस, वीकली CPR अगेन नैरो. अगर इसके ऊपर ऊपर रहता है देन फेयर इनफ, लाइक लुक्स ऑल राइट, है ना, लुक्स ऑल राइट. लेकिन मंथली में बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है एंड ऑल दैट, सो दैट इज अ लिटिल ट्रबलसम. बट ये गिरा CIP lower high, I mean higher low, sorry, goes up, higher low. So if it continues, maybe once it breaks this also, it's good. So yeah, looks all right for now. Kamdhenu, somebody else spoke about Kamdhenu today, in fact. Kamdhenu is still coming to EMA. So you can see this, right? Trajectory कैसा है, एकदम straight perpendicular ऊपर जा रहा है, then correction हो रहा है, right? Wicks on the upside, correction हो रहा है. So you need one good month. One good month अभी तक आया नहीं है. Month पे है. This is your support level here. I've already drawn this parallel channel, and bullish divergences बन रहे हैं बार बार.
सो एक हफ्ता अगर अच्छा हो जाएगा तो दैट मेक्स इट 0-1-2 काइंड ऑफ अ सेटअप. एंड डेली में क्या आप कुछ बना सकते हो? प्रॉब्ली नॉट, है ना. सो दिस इज योर सपोर्ट लेवल हियर. ईएमए जब तक मंथली ईएमए के ऊपर है, यहाँ तक है बैठा हुआ, तब तक ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पे कभी ना कभी सपोर्ट लेके इट विल रीस्टार्ट. बट वो कब होगा ये we'll have to wait for a good month, एक अच्छा monthly candle, and that will probably give you the right indication for Kamdhenu. Then we have Gale. गेल लुक्स ऑल राइट यार, कुछ है नहीं. मंथली चार्ट एकदम मेकिंग न्यू हाइज, वीकली में भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है, डेली में भी कुछ नहीं है. इफ यू इंटरेस्ट इन ट्रेडिंग दिस, आई थिंक पुट अ बिगर मूविंग एवरेज लाइक अ 30 और समथिंग, बिकॉज आई थिंक ये बार बार स्पाइक मार रहा है नीचे, एंड देन टेक इट नियर द ईएमए विद द सिस्टम. बट अभी तो एकदम फर्स्ट क्लास है, नो प्रॉब्लम. लाइक इफ यू आस्क मी दिस इज मेकिंग न्यू हाइज, तो मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है बोलने के लिए कि भाई ये रेजिस्टेंस पे आ गया है, ऐसा कुछ. सब अच्छा लग रहा है फंडामेंटली, आई डोंट नो, टेक्निकली सब अच्छा लग रहा है. Hourly HN is in voltas. Let me open voltas once again. So 1 hour chart. Am I zooming in? Doesn't look like. मैं इसको ऐसे बनाता, शायद ये मेरा ब्रेकआउट होता, यहाँ ट्रेंड लाइन से टेस्ट एंड देन ऊपर जा रहा है. फिर मैं इसको हमेशा कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से जोन्स बनाऊंगा. सो दिस विल बी माय जोन. सो दैट्स अ ब्रेकआउट, मे बी चेंज इन पोलैरिटी एंड देन मे बी स्टिल ऑन द अपसाइड, बट ये आपका बेस बन गया, ये जो लो बना हुआ है. डज दैट मेक सेंस? अगर हम इसको, आई थिंक यू आर मेकिंग इट टू स्मॉल, इज इट लाइक समथिंग लाइक दिस? बट यार दैट्स, मैं नहीं करूंगा. I think you're making it too small, like something like this or something. तो इसके हिसाब से तो टारगेट भी आ गया है ना, इसके हिसाब से तो टारगेट इज डन if this is what you're looking for. In 15 minutes it is more clear. I think that is the one you're making, but then according to that it is done. Shoulder, head, shoulder, I think this is what you're talking about. Side. इसमें तो टच ही नहीं आएगा. नहीं ये तो नहीं है. I think I would have still made something like this, shoulder, head, shoulder and breakout, but target is done then. Otherwise, you know, अगर है भी तो target is done, you know. 15 minutes, yes, है. All right, I think I've covered everything here. Thank you very much. Have a great weekend, guys, and enjoy yourself. Winters are here. Stay safe, stay happy, enjoy life, and I'll see you again next weekend. Take care. Bye bye.